just planning to start the next one, that is marine pollution. So whatever time we have lost, I'll take that much time extra. So you can be around and we will finish the class like a little late because of the time that we lost. Anyways, so if we talk about marine pollution, so if you remember जो परसों discuss किए थे उसमें what are the there we discussed a lot of sources for freshwater pollution and I told you that it is a different source of lot of different sources of pollution are there for marine pollution as well. So इसी वजह से we are keeping it also separate, and plus if you look at marine pollution, they have some factors which are a major source of problem in marine areas which you don't in general see in freshwater system. So for example, the picture that you see is of oil spill, and oil spill is one of the major problem that we witness in oceans, right? So technically speaking, whatever problem we discuss for freshwater pollution also stands true for marine pollution, right? But what happens is freshwater pollution के जो भी फैक्टर्स हैं वो मरीन पोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है, बट मरीन पोल्यूशन में थोड़े एडिशनल एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, राइट? जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है ऑयल स्पिल का, उसके अलावा भी अभी काफ़ी एग्जांपल दिखेगा. आई जस्ट गो अहेड एंड डिस्कस ऑल द फैक्टर्स. सो वी डिस्कस्ड अबाउट, यू कैन सी न्यूट्रिएंट्स. सो सेट जो सीवेज या रन ऑफ से मरीन एरियाज में जाता है उसकी वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है. एंड द अदर डे वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ algal bloom happens because of nutrient enrichment. Even algal bloom happens in the ocean. So यहाँ पे बस जो organism है वो different होता है. You can understand that part. Like instead of green alga, you will see red alga blooming. So that is one of the things that you can understand. Then obviously sediments, जो भी erosion होता है because of water and all of those things, जो soil erosion वगैरह होके sediments अगर पहुँच जाता है, और अगर हमने कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कर रखा है, जैसे कहीं पे खुदाई हो रही है या माइनिंग तरह की कुछ चीज़ें हो रही है, तो उसमें भी what we can experience is that those lot of sediments come out and they mix with water, they end up in the ocean, right? So those sediments can also be a problem because they can choke the animals which are there in the ocean, and obviously they can cause turbidity in water. Even machliyon ko you can understand that they will be facing problems when you talk about it can block the gills and all of the fishes, right? You can understand that part. So what happened was that there are a lot of pathogen also which enter into the ocean through the sewage and also through the livestock if it is there, and they contaminate the coastal area, they damage the seafood that we harvest from the ocean. So that is also there. Sometimes human activity also leads to invasive species, because you can understand that human activity की वजह से कुछ species जो वहाँ के native नहीं है ocean area में जहाँ पे कर रहे हैं, but human activity की वजह से वहाँ पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पे जो native species हैं उसको impact करते हैं. So so fishery या किसी man-made transport system जो oceans में चलता है, या फिर जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं अलग से ओशंस में, तो उसके थ्रू कभी कभी होता है कि स्पीशीज जो नेटिव वहाँ के नहीं है, इट कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स व्हिच कैन which gets transported because of human activities and they lead to problems. So obviously invasive animals destroy the native species, and उसके बाद it impacts the biodiversity of that particular region, right? And one of the major problem that you witness in the ocean is persistent toxin, जो मैंने बताया था कि whatever we use on land, उसका एक major impact जो होता है वो क्या कहते हैं, जो persistent toxin होता है उसका एक major problem ये होता है कि it doesn't degrade, and what it happens is that if you have used it on land, it eventually ends up in the ocean through various processes. And उसके बाद क्या होता है कि since those things doesn't degrade in nature, what happens is that they can definitely lead to a lot of problem over a longer period of time, because what happens is that it can enter food chain, it can contaminate the seafood, it can come back to us through biomagnification, जिसका एक example मैं दे रहा हूँ PCB. PCB का एक one of the reason why PCBs was banned because it was causing reproductive failure in humans, and it was banned way back in 1980s. Right? 1980 के दशक में ये ban हो चुका है. It's almost 40 years since it has been banned, and now also we find PCBs in the ocean, because जो भी PCB हमने उसके पहले use किया था, they have all ended up in the ocean. So that is one of the problem that we are dealing with. So this is an example of a problem which we see in the ocean because of human activities, and since it doesn't degrade, it is obviously there in the ocean. Then if you look at the next factor, oil spill, that photograph that I have just shown some time back before we were starting the class. So oil spill happens through offshore drilling. We do a lot of offshore drilling activity, like for example India में Bombay High है, it's an example of offshore drilling. उसके बाद oil tankers, if we buy oil from different countries, so we get the oil mostly through oil tankers which comes via ocean, and that is also sometimes accidents can happen and it can lead to oil spill in the ocean. Sometimes there are accidents like collision of ships, जैसे उसका भी एक example है, चेन्नई में हुआ था in 2017-18 के वहाँ पे जनवरी में an oil spill incident happened in Chennai, right? So उससे क्या होता है, oil spill basically tars the beaches, it can completely kill the marine life of that particular area. There is a layer of tar that forms on top of the ocean, and obviously it can cause a lot of problem for even marine birds, including animals that are obviously below the
water which is there in the ocean, they are also being impacted by it. उसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है या फिर जो भी फिश नेट है, सबसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन द ओशन इज फिश नेट्स व्हिच फिशरमैन डंप्स इन द ओशन. Then you have those garbage which are probably dumped by cargo ships and cruise ships and all, which has a lot of plastics and other non-biodegradable material. And obviously all of these garbage that gets accumulated in the ocean, they keep damaging the, harming the marine life, and especially fishing nets, they can keep on catching marine life without any use, because you can understand that these animals get entangled in these nets, and they're even referred to as ghost nets because we're not even using them. So it can continue catching fishes, even larger animals like turtles and all get stuck in those nets and they die in that particular process. So you can understand. उसके अलावा some that radioactive waste को dump करने का अभी दो ही मेजर तरीका हम यूज़ करते हैं. That is, one of the thing is that we pack them in lead containers and then dump them under the ocean, or we bury them under the ground. So that is what we normally do, and you can understand that these nuclear waste can sometimes, if those containers get damaged or something, they can make those areas radioactive and can create problem for the aquatic life, and it can even enter food chain, right? So all of these problems happen. And thermal pollution हम आगे discuss करने वाले, and obviously noise pollution भी आने वाला है. So if it happens in the ocean, thermal pollution and ocean, it leads to problem within the ocean. So we're going to discuss that anyways. So this is a photograph which shows a bird that is impacted by non-biodegradables. As an example, I'm just trying to show it. This is an albatross, right? And these, that if you try to find about information about albatross, that these birds are found in remote islands mostly, right? Remote island matlab hai wahan pe wherever these birds live, there is no human interference. They are completely isolated from humans. We normally do not see albatrosses in our regular life anywhere in the world. Only in some places you will find them, and they are found in remote islands. So this is a photograph of the bird that was taken in a place known as Midway Atoll, which is a island in the Pacific Ocean. So this particular island that is there, Midway Atoll, that is there, it is impacted by man-made plastic pollution, and that these birds continuously fly in the air and they dive underwater and catch these fishes and all for eating. But unfortunately, because of oceanic currents, these plastic gets dumped around those islands where these birds live. And unfortunately, while they are catching fishes, they sometimes end up catching, most of the time, they end up eating these plastics also along with the fishes, because there is too much concentration of plastics in that. And you can see that this is one of the bird that died because of consumption of plastic. And you can see the entire, dissection ke baad, you can see that entire bird is completely full of plastic inside it. So that is one of the problems that you can witness, that even though we are not directly harming some birds like albatrosses, they are impacted by plastic pollution that is there in the ocean. Again, it is because of our activity. Like, we have dumped so much of non-biodegradable waste, and many of these non-biodegradable waste might resemble some of their seafood that they eat, because they're obviously observing from a distance and they end up eating it without unknowing. I mean, unknowingly they will end up eating these plastic, and over a period of time it will accumulate in their body and they die, because stomach cannot further take any normal food that they are supposed to eat because it is full of plastic, which doesn't get digested and all, and the bird eventually dies of starvation. So that is what you see on the screen. It's a picture of that albatross bird only. And there are some important things also that we need to discuss about marine pollution, because that in marine areas you have some of the most important ecosystems which is highly diverse, like coral reefs. That coral reefs are referred to as the rainforest of the ocean. As of now, what we know is that 50% of the marine biodiversity is associated with coral reefs, and coral reef is only 1% of oceanic area. So that means that 1% area accommodates 50% of biodiversity. So you can understand how important coral reefs are, and marine pollution is highly problematic for coral reefs. And if coral reefs are lost, then we will eventually lose a lot of species. So even biodiversity will get impacted. So this is one of the major impact that we will see if we are completely damaging the marine ecosystem that is there. So you can understand that part. So obviously, this is one of the things that we need to keep in mind, and obviously it is a very important thing to understand that even from human point of view also, that coral reefs, if it is associated with 50% of ocean's biodiversity, that a lot of countries and a lot of people are dependent on seafood, right? So even it will impact the marine productivity of oceans, because the fishes might become extinct, the things that we are consuming, their population will get reduced substantially, right? So obviously we might not get the availability of resources that we have right now from the oceans in future. So that is one of the major problems that is associated with, damage to coral reef. So even it is going to impact us in a negative way, right? So that is one of the things that we need to understand. Anyways, so one more example that you can always read, one of the major problems that tells us that how human activity, initially we were negligent about the problems that we are creating in the ocean. So this is one of the thing that you can go and read. Just say, in past, if you understand that we had this
big problem that happened in Japan, that was Minamata uh, Bay, where mercury was being dumped in the ocean. By one of the industries. This is a problem that happened in 1950s. And this led to a problem which we now call as Minamata disease. And it was basically linked to mercury pollution, because you can read that how fishes became, the marine seafood that was there, mostly fishes which people were consuming in Japan, they had high concentration of mercury. And when it entered food chain and it came back to us through fishes, it was causing a huge problem to humans as well. So you can read about this as an example when you think about marine pollution. Is one of the historical case studies which tells us how biomagnification can impact humans in a negative way. So this is an example that shows that. And there are things that we can do to obviously control marine pollution. That is something that you see on screen as well. That obviously we should be aware about the problems that are there in the oceans, because obviously we are not directly dependent on ocean. You know that, because we can't consume water from the ocean, but there are a lot of things that we get from the oceans, and it's a very important ecosystem, right? Even many countries, and including our country, a lot of uh, you know people are dependent on their livelihood and seafood, which comes from the ocean. So obviously we need to be aware that oceans may, if we create problems, it is eventually going to affect us. Sometimes we can use some organisms like we call as superbug. If it is a solution for oil spill, you can understand that oil spill may, it's a very difficult situation to manage, right? If oil spillage happens, so what happens is that during an oil spill, sometimes these bacteria is used, which can eat oil, which we call as Pseudomonas putida. And Pseudomonas putida का एक nickname है जिसको बोलते हैं super bug. So what it does is that it can metabolize oil. So it is one of the factors that is responsible for solving the problem or issue of oil spill. So that is something that we need to keep in mind. That it is also one of the things that we can do using eco-friendly materials in the ocean. So that is something which also, thermal pollution. के लिए we should not
dump hot water in the oceans. We will discuss it next. उसके अलावा solid waste को direct dumping, we should not directly dump solid waste in the ocean. We should try to recycle solid waste. We should not dump poisonous waste into the oceans like persistent toxin or radioactive waste, so that oceans are protected from those things. Always treat the sewage and industrial, the domestic sewage and the industrial effluents, which we understand that they can also harm the ocean in negative way. And as of now, we don't have much of a concept of marine protected area. You know that there are a lot of areas which we can protect in the ocean also. And we can always establish some protected area where human activity should be limited so that animals can recover in those places. So that is a very important point that we should always keep in mind, that we should not open all the areas for fishing and all. Making marine protected area is a very important step that we can take, and that will be very helpful for us, right? So that is something that we can keep in mind, that these are all the points, some basic things that we can think of. If we just do management of things that we are generating properly, we are able to solve this particular problem. But right now the problem is that we are not managing things properly, especially in our country. We know that we are not recycling things, right? We are not treating our waste that we are generating every day. Our waste treatment plants and effluent treatment plants and sewage treatment plants are not running at full capacity. Plus, we don't have enough STPs and ETPs to clean the water before it gets dumped in the river system, right, or marine areas. All of these problems does exist, right? So we can understand that we need to upgrade a lot, and only then we will find a solution to these kind of problems, right? So the next type of pollution that we see is basically what we call as thermal pollution. So as the name suggests, the thermal pollution, as the name suggests, this is basically referred to as like it's related to temperature. That means the point that I want to raise here is that you can understand that it is definitely something that we can keep in mind, that it is those human activity which leads to the increase in the temperature of the water system. So obviously, what are those human activity which leads to increase of temperature in that water water body? So there are two important factors. Like one factor is more problematic, the first one, because it is basically causing a huge increase of temperature locally, because we are talking about discharge from industry. So what are these discharge from industry? You can understand that when you look at thermal power plant, and what I'm planning to point out is that there are many industries, like especially the power generating industry, where water is used as coolant. So water that is being released may not have pollutants, but it is released at a high temperature. For example, if you talk about nuclear power plant or thermal power plant, water is being utilized as coolant to cool down the machinery, right? Or so whatever water comes out after cooling it down, when water is used as coolant, so that water is at a very high temperature. And if you can understand that if that water directly gets released in the river system, पानी में अगर डाल देंगे वो गर्म पानी, तो लोकल जहाँ पे भी वो नदी है या तालाब है, whatever, wherever that water gets dumped, वहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, एंड उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. So that is one of the things that you can keep in mind. So local ये इम्पैक्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा है, राइट. सेकेंड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, राइट. अभी ऑब्वियसली पता होगा कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से मोस्टली we are in a situation where greenhouse gases have increased, and that greenhouse gas has led to an unprecedented increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere. So you can understand that greenhouse gases like carbon dioxide have increased the temperature which is there, because you know that these greenhouse gas traps the infrared radiation from the sun, infrared radiation through infrared radiation is the process by which heat of the sun that comes to the earth escapes back, and these infrared radiation are being trapped by these greenhouse gases. So unfortunately, we have seen a more than 50% rise in these greenhouse gases in the last 200 years. So obviously this problem is there. So you can understand कि जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वाटर का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा ही साथ साथ. So that is something that we need to understand, that obviously that is it's happening all over the globe, not just in a small area. But it may not have that severe impact compared to the first one, where a large quantity of water is dumped in certain places in a lake or a pond, so where it can be completely damage the entire aquatic ecosystem. The first point that you can see on the screen. So what are the impacts of thermal pollution? So what you can see is that it lowers the dissolved oxygen, right? That is obviously a big problem, because when you heat the water, the oxygen level will decrease. Why? Because you know that if you normally also घर में देखा होगा, अगर आपने कभी चाय वाय बनाया, तो when you heat, the air will get released because the molecules will drift apart, and the air which is dissolved in the water, that will escape. So that is where oxygen will escape out from the water. So obviously O2 concentration will decrease in the water. Then you can understand that pathogen, that warm condition favors the growth of pathogen, right? So obviously when there is heat, so it can favor some growth of some microorganisms, right, which can destroy the the quality of water, right? You can understand, and the pathogen level will increase.
harms the biodiversity is understandable. Why? Because अभी पहला पॉइंट है ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करेगा, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है. So that is what you can understand here, that you know that fishes को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है वाटर बॉडी में. और अगर हम पानी को हीट करेंगे, you know, if we are heating the water, so what happens? If we are heating the water, the oxygen will release from the water, right? So obviously जो fish के लिए oxygen availability है वो deplete करेगा, so their survival will be difficult, right? So that is how it harms the biodiversity. Oxygen level is not there. And एक और problem है, because many of these organisms heat sensitive होते हैं. आपको पता होगा कि पानी का एक टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें ये एनिमल आराम से रह सकते हैं, लाइक से 22 से लेके 28 डिग्री के बीच में many of these organisms survive पानी के अंदर. उससे ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा पानी तो heat shock लगेगा. So that will definitely harm the biodiversity in negative way. And चौथा point है, it's about the change in the physical and chemical property of the water. You know that a lot of chemical and reactions happen at higher temperature, and obviously it will obviously change the composition of the water that is there if some reactions happen. So that is something that is also very common because of this, you know. So anyway, so I hope you know this is clear to you know all of you that how thermal pollution is going to impact the aquatic ecosystem. So this thermal pollution actually can happen in both fresh water and marine areas. So that is also something that we should remember. अगर आपने कभी सी कोस्ट के आसपास ये गर्म पानी रिलीज कर दिया है तो वहाँ पे लोकल
कल उस एरिया में प्रॉब्लम होगा। और अगर आप शहर के आसपास अगर किसी नदी नाले या फिर किसी पॉन्ड में अगर आपने डाल दिया है तो वो फ्रेश वाटर का में थर्मल पोल्यूशन हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड. So that is there, and obviously some examples that you can see see, this is an example I'm giving from US where this problem was initially perceived like a lot of that America is a power United States of America is a power sufficient country with several power plants across the country, and many of these power plants utilize water as coolants, and obviously if they don't take necessary precautions it is going to harm the river systems or marine areas, if it is around the coastal area of the country. So that is something that you can easily understand. And in India also we have these kind of power plants where water is being utilized as coolant. So our country maybe we can face the same problem if we are not aware about thermal pollution, and if we directly release water in the hot water in the aquatic ecosystem, it will definitely harm the aquatic ecosystem. So how can we control thermal pollution? So that is an important point to understand. That obviously public awareness, because क्या होता है कि we have several other major form of pollution कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये भी एक form of pollution है जो harmful है. There is obviously lack of awareness about thermal pollution, so people don't realize that गर्म पानी अगर रिवर या पॉन्ड में रिलीज कर देंगे तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो knowledge about these things is also very important. People should be made aware of these kind of things. So that is something that we should always understand and make people aware that these are also very dangerous. This is also a very dangerous form of pollution and can completely harm the aquatic life in a negative way. So obviously we should never do direct discharge in the aquatic ecosystem. Direct discharge रोकने के लिए क्या क्या तरीका है? There are some temporary structure जो बनाया जाता है. कई countries को realization हो गया है और ये कुछ structures बनाए हैं जिसके वजह से direct discharge रुक सकता है. For example, there is something called as cooling ponds, cooling towers. तो इनमें क्या होता है cooling pond और cooling tower में? So that is an important thing to understand. तो cooling pond में क्या होता है? We collect water somewhere, right? And after that, we allow the water to cool, and then we will release that water in the river or pond. So that means over a period of time, the water will naturally lose its heat, right? Because उसको हमने temporary store कर दिया है कहीं पे. उसके बाद फिर उसको रिलीज करेंगे. तो एक पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर हमने बना रखा है जो आर्टिफिशियल है. उसके बाद उसमें पानी को स्टोर किया, पानी धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया. सो दैट इज कूलिंग पॉन्ड. देन देयर इज कूलिंग टावर. जैसे आप समझ सकते हैं कि वाटर को हाइट से नीचे गिरा दिया. सो जैसे आप नॉर्मली चाय भी ठंडा करते हैं लाइक ऐसे, तो व्हेन एज द वाटर कम्स डाउन फ्रॉम अ हाइट इट ग्रेजुअली लूजेस हीट. तो जब तक नीचे आएगा धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा. सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ कूलिंग टावर. उसके अलावा एक टेक्निक होता है जिसको यूटिलाइज करते हैं पानी ठंडा करने के लिए, बोलते हैं एयर शावर, राइट. तो एयर शावर में क्या होता है, हॉट वाटर के बीच में से ठंडी हवा निकाल देते हैं, बाय यूजिंग सम टेक्निक दे आर ब्लोइंग कोल्ड एयर through that hot water. So that is also reducing the temperature of the water. So that means these three techniques can solve this particular problem. So obviously we can utilize these techniques to cool the water before it gets released in the river or pond or marine areas wherever hot water was being discharged, so that the aquatic ecosystem does not get harmed because of thermal pollution. Very important. And there is another thing that you can see on the slide. Probably it talks about cogeneration. Normally you can understand cogeneration क्या होता है कि hot water जो है उसमें energy भी होता है, right. So hot water has energy because obviously it is at high temperature, and obviously it can help us produce more power. So obviously that is what is cogeneration. So when we utilize this hot water to generate more power, we refer to it as cogeneration. So that is a very important point. Cogeneration is an important thing, and so where we can utilize hot water to generate more power. So that is something that we can also understand that it can be a source of power as well. उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से बचने का क्या तरीका है, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम करना है और एफॉरेस्टेशन रीफॉरेस्टेशन करने का के बारे में सोचना है. सो प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज वेयर द फॉरेस्ट हैज बीन डिस्टर्ब्ड or planting some new areas under forest cover, that is going to help us solve the problem of global warming, which is also a kind of problem that is even causing thermal pollution in globally. So obviously these are all the things that we should keep in mind while this is also a big problem, and we should deal with thermal pollution also, and we should be aware about these problems, that if we should not be dumping hot water directly in the aquatic ecosystem, so that the biodiversity of those areas are not harmed because of us, right? So that is obviously something that we can keep in mind before we take any kind of actions. So when we are making action plan or when we are making all of these industries, we should always understand that पानी को ठंडा करने के लिए we need to make setup so that water does not go at a high temperature to these aquatic areas, aquatic ecosystem, and those ecosystems should not get impacted by human activity. So these are the points that you should keep in mind while you understand. You should understand that thermal pollution is also a big problem. And we have another very important noise pollution issues that we have is noise. Obviously, noise is a very common thing that you all witness, especially when you are living in a mega city like Delhi, where a lot of people live. That population of Delhi is more than
25 million, right? तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी रहते हैं दिल्ली में. तो you can understand कि obviously anthropogenic source of noise is very high, and Delhi is one of the noisiest city in the world. When you are talking about cities which are having high amount of noise pollution, Delhi is one among them, right? So you can understand that part. Anyway, so you should be aware of the fact that noise is also a very big problem, and it is very detrimental for our health. So obviously we should definitely take this problem also seriously, because we can discuss what all problem it creates and what are the sources obviously. So we have some natural source, but you know that ये natural source जो है noise pollution की हमेशा होते नहीं है. These are all very uncommon, like thunderstorm, lightning के साथ जो आता है thunderstorm, and then there is volcanic eruption. Obviously हमारे country में तो we don't have any volcanic eruption, but we also we witness thunderstorm कभी कभी. इसको natural factor बोलते हैं. अगर you can see one thing that it is not a common phenomenon. You don't really see it all the time. So obviously you should understand that it's not a big deal right now. Natural source is not a big deal. But if you look at the man-made source, it is so many. Anthropogenic source is too many. इतना ज़्यादा सोर्स है man-made की we have to categorize. हम नाम भी नहीं दे सकते कि इतनी ज़्यादा हो गए हैं man-made source. तो पहला सोर्स क्या है नॉइज़ पोल्यूशन का, जो सबसे ज़्यादा हमेशा आप सुनते रहते हैं, सबसे ज़्यादा आप एक्सपोज रहते हैं. अगर आपके घर में कहीं से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एक्सपोज टू इट मोर देन एनी अदर प्लेस, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा टाइम घर पे ही बिताते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली घर पे जो हम अप्लायंसेस चलाते हैं, दे आर रिलीजिंग they are producing sound. You can understand ki they're definitely one big source of noise pollution. So you can see you have washing machine or mixer grinder, or you have vacuum cleaners, or even fan or air conditioner or coolers. They are also source of some kind of sound. So all of these noise that are there in the household, that is also causing a lot of problem. It does cause a lot of problem, right? So you can understand ki you are constantly exposed to these kind of sounds, and sometimes it is unavoidable also, because आपको काम तो करना ही है, so obviously it will produce noise, but हमें जानना पड़ेगा कि वो उससे impact तो पड़ता ही है. We have to listen to such sounds which we don't like. And दूसरा important source of noise है क्या? Industrial noise. अभी हमेशा आप expose नहीं होते industrial noise से, but कुछ लोग काम करते हैं उस condition में, तो वो ज़्यादा expose होते हैं. आपको पता होगा कि industrial noise, especially जो factory में workers हैं, या फिर जो construction site पे काम करते हैं, या फिर आप किसी community helper जैसे carpenter वगैरह को बुलाते हैं अपने घर पे, तो वो सब उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट कारपेंटर, दे विल बी कमिंग विद अ ड्रिलिंग मशीन और a metal cutter or any of these things. You can understand that they are very high source of noise. So that is what you can understand. So all of these pollutants can be very obviously we are not getting exposed to it every day, but again, आप नहीं एक्सपोज हो रहे हैं, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉइज विच मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन दोज कंडीशंस आर एक्सपोज टू इट, सो दे आर गेटिंग इंपैक्टेड बाय इट. आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, ये तो घर पे कभी कभी होता है, बट इफ यू गो आउटसाइड योर हाउस, इफ यू आर विजिटिंग अ कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ पे भी बहुत तरह की मशीनरी चल रही होती है जहाँ से नॉइज़ रिलीज हो रहा होता है. उसके बाद अगर आप किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं, सो उस समय भी नॉइज़ प्रोडक्शन होता है. तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर डेफिनेटली causing problem for and leading to situation which is not very good for the humans. So obviously it can be a problem, right? And even other organisms. So there nobody likes such kind of sounds, industrial noise and all. तीसरा जो मेजर सोर्स है आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट नॉइज, जो व्हीकल से प्रोड्यूस होता है, राइट? अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ट्रांसपोर्ट नॉइज बोलते हैं. चाहे वो आपके स्कूटर से आए, चाहे वो स्पेसशिप से आए, इनमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा होता है इस दौरान कुछ ना कुछ का. तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, ट्रक से आए, कार से आए, एनी ट्रेन से आए, राइट? अगर आपने गाड़ी का हॉर्न बजाया है, सो ऑल ऑफ दिस इज लाइक अ सोर्स ऑफ नॉइज विच इज देयर, which is obviously again anthropogenic noise, and this is produced while we are transporting something from one place to another. So that is obviously something that we can keep in mind to understand that how these transport noise sometimes can be avoided also, right? वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अननेसेसरी भी करते हैं, so we will discuss that. चौथा है, ये पहला जो 3 कैटेगरी था, जैसे डोमेस्टिक नॉइज या इंडस्ट्रियल नॉइज या ट्रांसपोर्ट नॉइज, ये सब क्या है, नेसेसरी साउंड है. बहुत सारी चीज़ें इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज आप बहुत डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर. घर में इक्विपमेंट्स है, उस पर डिपेंडेंट हैं. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, उस पर बहुत सारे लोगों का काम होता है, सो ऑब्वियसली वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट. ट्रांसपोर्ट नॉइज भी, आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना लें, उससे भी नॉइज़ तो निकल ही रहा होता है. चाहे अपनी गाड़ी निकालें, चाहे मेट्रो में बैठें, यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉइज़ तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कुछ भी हो. तो वो सब हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो नेसेसरी साउंड है सारे, राइट? कुछ कम कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट हाउ, बट समटाइम्स इट इज़ अनअवॉइडेबल. बट जो चौथा कैटेगरी है, वो हम ऐसी चीज़ है जो हम मतलब फ़न के लिए करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट नॉइज, इट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट, जिसको हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं. जैसे हाई वॉल्यूम पे गाने बजाना, या फिर लाउड स्पीकर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर यू कैन अंडरस्टैंड पटाखे बर्स्ट करना. So all of these, like music concert और ये सब जो होता रहता है, तो obviously they're all some kind of, they release a lot of noise in the environment, and obviously they can be a
they can be a source of problem for all of us. So you can understand that part. So what I'm trying to make you understand here is that these are all the things में बहुत सारी चीज़ें हम avoid कर सकते हैं. Entertainment noise is not a necessary sound. I mean, it's something that is being produced just for the sake of entertainment of few people, and it can completely disturb other people who don't like that kind of sound, right? तो यही चीज़ है point जो मैं highlight करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये avoidable noise है. आप अगर गाने बजा रहे हैं जोर से तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, but पूरे society को आपने परेशान कर रखा है उसकी वजह से. So you can understand that part. So that is definitely a problem, for the society. And so चाहे किसी भी तरह से आप कर रहे हैं sound production और उसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आपको entertainment हो रहा है, but it might not be an entertainment for other people, right? So obviously you can understand, right? Anyways, fine. So I believe you got the point, and what I'm planning to make you understand now is that how it impacts humans in a negative way. That is a very important point to understand. So when you look at the this particular chart, you can see that it shows you the tolerance level of humans, right? What does it show? It shows you one very important factor that noise is as I said, noise क्या है? Noise is a relative term. कुछ ऐसी sound है, कुछ ऐसा sound है जो हमें पसंद है, वो ज़्यादा डेसिबल पे भी होगा तो हम उसको टॉलरेट कर लेंगे, बट कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कम डेसिबल पे भी हैं बट हम उसको टॉलरेट अच्छा नहीं लगता हमें तो हम नहीं टॉलरेट कर सकते हैं. तो नॉइज़ एक रिलेटिव चीज़ है, टर्म है, तो ये समझना पड़ेगा कि मतलब ऐसी चीज़ है जो हम कहीं पे हम अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा, बट एक ह्यूमन का थ्रेशोल्ड क्या है? 120 डेसिबल का माना जाता है. द ह्यूमन थ्रेशोल्ड इज अराउंड 120 डेसिबल. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. बट क्या है कि बट कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझना है यहाँ पे है कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम टॉलरेट कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉक कंसर्ट, अगर आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं जहाँ पे रॉक म्यूजिक चल रहा है, वो 150 डेसिबल तक चला जाता है, बट कुछ लोग उसको टॉलरेट कर लेते हैं काफ़ी हद तक. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली what you can understand in this situation is that because they are enjoying that kind of music. बट एक कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो आपको वो जो लगभग 100 डेसिबल तक ही हैं बट आपको पसंद नहीं है तो आप उसको टॉलरेट नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ 90-95 के डेसिबल के आसपास उसकी आवाज़ आती है जो कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है. हमें पसंद नहीं है, इसलिए वी आर डेफिनेटली इफ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट क्योंकि वो जो साउंड है वो वी कैन टॉलरेट दैट पर्टिकुलर साउंड, राइट? सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि वी डोंट, इवन इफ इट इज एट लो डेसिबल, we will not like that particular thing, right? So you can understand that part. So that is one of the most important point to understand that अगर आपको साउंड पसंद है तो आप ज़्यादा नॉइज भी टॉलरेट कर लेंगे, अगर नहीं पसंद है तो आपको कम नॉइज में भी इरिटेशन शुरू हो जाता है, राइट? सो दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड. Anyway, so that is a threshold वाला chart, but उससे अब सीखते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमंस को. It causes problem in our hearing ability. That is obviously you can see on the screen that it can cause deafness, permanent or temporary. I hope you got the point कि अगर आप नॉइज़ पे ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज होते हैं तो कभी-कभी कान का जो हियरिंग एबिलिटी है हमारा डैमेज हो जाता है. स्पेशली आपको पता होगा इंडिया में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डेफनेस का. स्पेशली जो लोग काम करते हैं नॉइजी इन्वायरमेंट में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है सुनने में, उनकी सुनने की शक्ति ऑलमोस्ट कम हो जाती है. सो दैट इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम. एंड आपने टेम्प्रेरी डेफनेस भी होता है जिसमें कि आप थोड़े टाइम के लिए आपको हियरिंग वी लूज द हियरिंग एबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज टेम्पररी डेफनेस. अगर कुछ ही टाइम के लिए खराब हुआ है फिर हम रिकवर कर जाते हैं तो दैट इज टेम्पररी डेफनेस. बट उसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन. दैट इज इट लीड्स टू लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, फटीग, राइट? कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा नॉइज से एक्सपोज हो जाते हैं तो. इट कैन ट्रिगर हार्ट अटैक ऑल्सो. अगर किसी का दिल कमज़ोर है तो इट कैन ऑल्सो ट्रिगर हार्ट अटैक. उसके अलावा एक और चीज़ है, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. आपको पता होगा कि अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि नॉइजी इन्वायरमेंट में क्या होता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. सो कॉन्सेंट्रेट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आप वी विल लूज द एबिलिटी टू वर्क प्रॉपर्ली. कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग एफिशिएंटली. सो ऑब्वियसली एफिशिएंसी गिर जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू, आउटपुट हमारा गिर जाता है उसकी वजह से. आपको एक पीस चाहिए होता है टू डू गुड वर्क एंड दैट इज एवरीबडी नोज दैट. अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप भी अगर एग्जाम लिख रहे हैं कहीं पे और आपके व्हाट यू अंडरस्टैंड इज दैट उस एग्जाम लिखते टाइम आप अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है उसके आसपास, सेंटर के आसपास, तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम लिखने में दिक्कत होगी, फोकस नहीं होगा आपका. सो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, आप कुछ नंबर लूज कर जाएंगे एग्जाम में. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉइज इज सोशल प्रॉब्लम. जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पड़ोसी को पसंद ना आए, राइट? सो इट लीड्स टू अनॉयंस एंड सोशल फाइट्स होते हैं इसकी वजह से. आपको पता होगा कि बहुत टाइम पे लोग इधर से उधर पुलिस को भी बुलाते हैं. आपको पता है बहुत सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है कई बार, राइट? फॉलो मतलब जैसे 11 बजे के बाद आप ज़्यादा नॉइज़ नहीं बजा सकते. तो बहुत लोग हैं जो उसके बाद भी मानते नहीं है बात और जो करने लगते हैं. तो कभी कभी लोगों को कंप्लेन करना पड़ता है इसके लिए, लाइक उसकी वजह से सोशल फाइट्स होती हैं. लाइक अगर आपका नेबर बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है तो आपको भी प्रॉब्लम होगा.
अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है उसके गाने और नॉइज़ की वजह से, तो आप बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. So all of this is a situation that you can understand that it is obviously you know a point to understand that definitely सोसाइटी में भी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, राइट. उसके अलावा वाइल्ड लाइफ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन का. आप मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके लिए आपको समझ में आ जाएगा. जैसे आपने अभी मरीन पोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था, उसमें आपको पता होगा कि हम मरीन एरियाज में जो जानवर मिलते हैं, जैसे आपने फोटो देखे होंगे स्क्रीन पे डॉल्फिन्स और वेल्स का, आपको पता होगा अल्ट्रासोनिक कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, राइट. अल्ट्रासोनिक कम्युनिकेशन को सोनार हम टर्म यूज़ करते हैं ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो सोनार में क्या होता है कि दीज एनिमल्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एंड दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. तो बिना किसी एटेन्यूएशन के ये साउंड बहुत दूर तक ट्रांसमिट होता है और आराम से ये जानवर आपस में बात करते हैं. दैट इज हाउ दे यूटिलाइज सोनार एज अ टेक्निक. बट वी ऑल्सो यूज द सेम टेक्निक फॉर आर अंडर वाटर कम्युनिकेशन. जैसे सबमरीन वगैरह अगर चल रहा है तो ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स विल they will definitely, you can understand ki they all have that kind of ability. तो what happens is क्या कि जब ये एनिमल का कम्युनिकेशन के बीच में ह्यूमन कम्युनिकेशन इंटरफेयर करता है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि अगर ह्यूमंस भी सेम अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे ओशन में, तो क्या होगा, एनिमल का जो कम्युनिकेशन है वो बीच में ब्रेक होगा. उसकी वजह से क्या होगा कि वो कुछ ऐसे साउंड सुनेंगे जो उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से उसका ओरिएंटेशन उनका खराब हो सकता है. आपने सुना होगा कभी कभी कि ये जो वेल्स और डॉल्फिन है कभी कभी समुद्र तट पे बह के आ जाते हैं, दे गेट वॉश्ड ऑफ शोर. क्यों ऐसा होता है? कभी कभी क्या होता है, ओरिएंटेशन खोने की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से. एक कारण ये भी है नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि अभी अब दिशाहीन होना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे लूज ओरिएंटेशन, कि किस तरफ जाना है उनको समझ में नहीं आता है. दे बिकम कंफ्यूज्ड बिकॉज दे आर टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज, अदर सेम स्पीशीज. तो दे आर कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. तो उस दौरान कभी कभी क्या होता है, स्पेशली जब सोशल एनिमल्स होते हैं जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स, बहुत सारे जैसे पायलट वेल हैं ग्रुप में रहते हैं, डॉल्फिन्स भी ग्रुप में रहते हैं, तो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर वेरी ऑफन, राइट. सो ऑब्वियसली अगर बीच में कम्युनिकेशन फेलियर होता है तो कभी कभी डायरेक्शन सेंस खराब हो जाता है, एंड दे एंड अप इन अ प्लेस जहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए था. दैट इज व्हाट लीड्स टू द प्रॉब्लम. दीज एनिमल्स गेट डिसोरिएंटेड एंड कभी कभी कुछ उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे समुद्र तट पे बह के आ गए, एंड दे डाई इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट वी सी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक नॉइज पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम है. उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके आसपास तालाब में या गाँव में, खेतों में, तो मेंढक बहुत आवाज़ निकालते हैं, स्पेशली मानसून में. क्यों निकालते हैं आवाज़? क्योंकि उनको ब्रीडिंग करना होता है. तो मोस्टली मेल फ्रॉग आवाज़ निकालते हैं. मेल फ्रॉग्स प्रोड्यूस साउंड एंड फीमेल्स अट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से. उनके पास होता क्या है कि फीमेल को साउंड मेल से उसका जेनेटिक फिटनेस पता चलता है, उस हिसाब से वो मेल चूज़ करके शी गोज टू दैट पर्टिकुलर मेल. अभी क्या होता है कि हम एंथ्रोपोजेनिक नॉइज जो निकाल रहे हैं उसकी वजह से कभी कभी ऐसी फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालते हैं जो उनके कॉल के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है. तो उसकी वजह से फीमेल्स डिसोरिएंट हो जाती हैं, तो उनके पूरे रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है इसकी वजह से. बहुत सारे स्टडीज़ हैं इंटरनेशनली, आप देखेंगे रिसर्च काफ़ी हुआ है इसके ऊपर कि कैसे ह्यूमन मेड नॉइज़ की वजह से इन एम्फीबियन का ब्रीडिंग प्रोसेस खराब हो रहा है. ये भी एक समस्या है जो एनिमल्स फेस करते हैं, राइट. तो वाइल्ड एनिमल्स पे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जिसको हम जानते नहीं हैं बट उतने अच्छे से, बट वी कैन सी कि वो काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से. बर्ड्स के ऊपर तो खासा इफेक्ट है. आपको पता होगा कि जो भी एरिया नॉइजी है वहाँ पे बर्ड्स आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि बर्ड्स का क्या है, टेंडेंसी अवॉइड करते हैं नॉइजी प्लेसेस, राइट. तो हमेशा आप देखेंगे बर्ड्स इंटीरियर में, इवन सिटी में भी, जैसे दिल्ली में बहुत बर्ड्स रहते हैं, आपको रोड के साइड के पेड़ में बर्ड्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे. एक आधा स्पीशीज़ कभी कभी दिख जाएगा, और कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ जैसे कबूतर वगैरह जो वैसे ही इन्वेजिव है, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम वैसे करते रहते हैं कबूतर दूसरे बर्ड्स के लिए, तो वो सब दिख जाएंगे. बट जो नॉर्मल बर्ड्स हैं जो हमारे अपने नेटिव स्पीशीज़ हैं, उन सब में ज़्यादा आप नहीं देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे. आपको जाना होगा क्वाइट एरिया में, जैसे आप रिज एरिया में घुसेंगे दिल्ली के आस, तो वहाँ पे आप अंदर में जाएंगे तो आपको पेड़ों पे दिखेंगे काफ़ी बर्ड्स. बाहर के साइड में रोड साइड ट्रीज में उतने नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो ट्रैफिक नॉइज़ है, ह्यूमन नॉइज़ है, तो बर्ड्स डेफिनेटली विल अवॉइड है. कुछ कुछ एक स्पीशीज़ दिखेंगे, बट इट्स नॉट कि दिल्ली में तो 300 से ज़्यादा प्रजाति हैं, तो यू डोंट सी दैम एवरी डे, बिकॉज उसके लिए आपको कुछ ऐसे एरियाज में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको ग्रीनरी ज़्यादा है और शांति ज़्यादा है. तो दैट इज़ वेयर वी विल फाइंड दीज बर्ड्स. तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि बर्ड्स अवॉइड करते हैं जो प्लेस नॉइजी होता है. तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर एनिमल्स ऑल्सो. आप डोमेस्टिक एनिमल के बारे में भी पढ़े होंगे कि उनके ऊपर भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कुत्तों के ऊपर. तो वो तो मैं वाइल्ड लाइफ के एग्जांपल देके चल रहा हूँ, बट अगेन डोमेस्टिक किसी भी तरह के जानवर पे इंपैक्ट पड़ सकता है जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. नॉइज इज a serious problem which can affect wildlife in a negative way, right? So obviously you can completely understand this particular point that कि सिर्फ अपने ह्यूमन के तौर पे तो सोचना ही है, बट इवन वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचते हुए भी अगर आप देखेंगे तो नॉइज़ प्रोड्यूस करना क्यों हार्मफुल होता है, ये आपको समझ में आएगा उसके बारे में. क्योंकि बहुत सारे जानवर पे काफ़ी अलग अलग जगहों पे हम जब नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं तो इट इम्पैक्ट्स देम इन अ नेगेटिव वे. सो अगेन द पॉइंट राइट नाउ इज दैट कि नॉइज़ पोल्यूशन हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राइट. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो ऐसी पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है जानना कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं आज की डेट में जहाँ पे जो कि वी कांट रियली अवॉइड,
घर पे जो हम मशीन चला रहे हैं जैसे मिक्सी है या फिर वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ से हम तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट हो चुके हैं इन सब के ऊपर. We can't avoid many of those things, right? But we should be aware कि इससे प्रॉब्लम होता है. People things get disturbed because of this, right? You can understand. तो ज़्यादा से ज़्यादा we can understand कि कम से कम जितना इस्तेमाल ज़रूरत हो उतना ही कर सकते हो, right? वेस्टेज नहीं करना है किसी चीज़ का, एनर्जी भी जाता है उसमें. You can understand that part. तो एक ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा अवेयरनेस कि आप कम से कम मिनिमाइज कर सकते हैं अपना इम्पैक्ट, राइट. अगर मान लो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, राइट, कि जितना ज़रूरत हो उतना ही हो, कुछ वेस्टेज ना हो. वेस्टेज का मतलब है कि मतलब अननेसेसरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो अगर आपको ज़रूरत ना हो. तो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रियलाइज. That is a very important thing to understand. Then you have this control of noise pollution from automobiles. कैसे करेंगे ये आप कंट्रोल? ये एक important point है. आपको अवेयर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में जो आपकी इंजन है उससे साउंड निकलता है, और अगर गाड़ी का आप सर्विसिंग ढंग से नहीं कराएंगे तो आपकी इंजन नॉइजी होती रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता होगा कई गाड़ियाँ होती हैं जो नए में काफ़ी कम साउंड निकालती हैं, बट अगर 5 साल 4 साल के बाद आप सुनेंगे उसी का इंजन का साउंड, पुअर मेंटेनेंस की वजह से नॉइजी हो जाती है, राइट. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड दैट these engines are very very noisy, and it can be, if it regular servicing is not done, it can become even more noisy. तो एक पॉइंट और आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हॉन्किंग भी एक फैक्टर है. जैसे गाड़ी का हॉर्न लोग बजाते हैं अपने. अभी क्या है कि कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी हॉर्न बजाते हैं. जैसे रेड लाइट पे खड़े हैं, आप देखेंगे कि रेड लाइट पे गाड़ी रुकी हुई, पीछे से बंदा हॉर्न बजा रहा है. ये कोई सेंस तो बनता नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि ट्रैफिक रूल है, रेड लाइट है, आप पीछे हॉर्न बजाएंगे तो आप रेड ग्रीन तो नहीं हो जाएगा, दूसरा बंदा चला तो नहीं जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वायलेशन टेक्निकली स्पीकिंग. आपको रेड लाइट जंप करना है बट दूसरे को तो नहीं करना है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. सो अननेसेसरी हॉकिंग आप देखोगे, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे दिल्ली में कि लोग रेड लाइट पे, और कभी ट्रैफिक जैम में भी देखोगे लोगों को, जब पूरी गाड़ियाँ ही स्लो जा रही हैं तो आपके हॉर्न बजाने से ट्रैफिक जैम भी खत्म नहीं होगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है, ये पता ही है आपको, और उस ट्रैफिक जैम के दौरान आप देखेंगे कि गाड़ियाँ काफ़ी स्लो मूव करती हैं, उसमें बहुत लोग इरिटेट होकर हॉर्न बजाते हैं, जिसका कोई पॉइंट नहीं है. इट्स पॉइंटलेस, राइट. तो बहुत सारी जगह पे अब कहीं पे इमरजेंसी हो तो आप हॉर्न बजा सकते हैं, बट अगेन अगर जरूरत ना पड़े तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है. इट्स अ पर्सनल चॉइस. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. एयरक्राफ्ट इज वन ऑफ द नॉइजिएस्ट इंजन. हम कुछ इनोवेशन करके उसका नॉइज कम कर सकते हैं, राइट. इंडस्ट्रियल मशीनरी को रीडिज़ाइन किया जा सकता है. सर्विसिंग टाइमली करेंगे तो उसका जो नॉइज़ का लेवल है, जो इंटेंसिटी निकलता है, वो सब मेंटेन कम हो सकता है. और आपने देखा होगा बहुत कई जगहों पे नॉइस प्रूफ वॉल्स, जैसे आप सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, उसमें क्या होता है, जो दीवार आप देखेंगे उसका जो साउंड जो हॉल से होता है, ऑडी से, वो बाहर नहीं निकलता है, राइट. सो ऑब्वियसली दैट द मल्टीप्लेक्स का जो वॉल होता है वो नॉइस प्रूफ होता है. कई जगहों पे लोग नॉइस प्रूफिंग करते हैं ताकि साउंड बाहर ना निकल पाए, राइट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वे टू अवॉइड नॉइस पोल्यूशन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता होगा मल्टीप्लेक्स चल ही नहीं पाएगा, बिकॉज एक ऑडी में अगर मूवी चलेगी तो दूसरे ऑडी में उसकी आवाज़ जाएगी. एक बेसिक नेसेसिटी भी है, बट मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो साउंड बाहर ना निकले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ही, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उनको 5-5 स्क्रीन चलानी है एक ही जगह पे. बट आपको ये भी दिमाग में रखना है कि ऐसी चीज़ें बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. नॉइस प्रूफिंग सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पे लोग करते रहते हैं ताकि जो डिस्कशन है या मीटिंग है, जो भी चीज़ अंदर हो रही है उसकी आवाज़ बाहर ना जाए. दैट इज़ अ पॉइंट दैट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड. सो ऑब्वियसली these things can be done to avoid noise pollution in so these are the points that we should keep in mind. उसके अलावा आप देख सकते हैं जो आखिरी पॉइंट है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांटिंग ट्रीज. उससे क्या होता है, ट्रीज कैन ब्रेक साउंड वेव्स. आपको पता होगा कि साउंड वेव जो है एटेन्यूएशन फेस करते हैं अगर सामने पेड़ हो तो. अगर आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास काफ़ी पेड़ पौधा है तो आपको बाहर की जो रोड की आवाज़ है वो नहीं आएगी, राइट. बट अगर आपके घर ओपन में है और पेड़ पौधा नहीं है आपके घर के आसपास तो आप काफ़ी एक्सपोज रहेंगे नॉइस से. तो डेफिनेटली ट्रीज कैन हेल्प अस, राइट. पेड़ पौधे काफ़ी हमारी मदद करते हैं साउंड पोल्यूशन से बचाने में. तो अगर हम ग्रीनरी बिल्ड करेंगे अपने आसपास तो हम पीसफुली रह भी सकते हैं. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब भी जो पोल्यूशन है ये बहुत ही जो पहला हमने 2 पोल्यूशन डिस्कस किया था, एयर और वाटर, उसके तरह डेंजरस नहीं है, बट इट इज़ स्टिल डेंजरस. इट इज़ गिविंग अस अ लॉट ऑफ stress and can do a lot of other problems to our body. So we should always avoid any form of pollution. Is not really good when you are getting exposed to it, right. So obviously you can understand that part. Even noise pollution is a serious issue and we should obviously avoid this problem and try to not be a contributor. अपने level पे भी आप कोशिश करें कि कम से कम noise produce करें, because उससे काफ़ी unnecessary sound आएगा and उससे बहुत harm होता है environment को. तो you can understand that part. And that is where I will stop today. But late से शुरू हुआ तो obviously इसीलिए I carried the class till late, and you can understand that what I can do is that I can give a recap also, because कुछ लोग शायद चले गए होंगे आज. So whenever we meet next, I'll give you a recap as well of what we discussed today, so that जो लोग मिस किए हैं तो उनको भी रिफ्रेश हो जाए. एंड परसों जो आखिरी क्लास होगा इस यूनिट के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे
सॉइल पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट, 3 टॉपिक जो रह गई हैं इस यूनिट की, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास. उसके बाद जब हम मिलेंगे तो वी विल मूव टू द यूनिट 6 एंड देन वी विल मूव टू यूनिट 7. सो दैट इज़ व्हाट द प्लान इज. ठीक है. सो आई अनफॉर्चुनेटली आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट स्टार्ट हुआ, बट आई बिलीव दैट जो भी हुआ मोस्ट ऑफ कुछ लोग चले गए थे, बट ऑब्वियसली कुछ लोग वापस रीजॉइन कर लिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी वर डिस्कसिंग दिस. बट अगर आपका कुछ भी छूटा है तो वी विल बी एबल टू कवर इट, डोंट वरी अबाउट इट. सो आई विल टॉक अबाउट इट. एक बार वी विल रन थ्रू द स्लाइड्स एंड एक रीकैप कर लेंगे व्हेनेवर वी मीट नेक्स्ट. राइट. ओके. सो दिस इज वेयर आई विल स्टॉप. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हेलो सर, हाँ. ठीक है.